आईसीएस कोचिंग सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज यूट्यूब चैनल दोनों पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे बिल्कुल शुरू से शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड या हिंदी शॉर्ट हैंड, जो भी आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो ये आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको इसका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसमें जैसे आप लाइव क्लास में पढ़ना चाह रहे हैं तो लाइव क्लास भी उसमें चल रही हैं, रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं। और जो है, जो बच्चे जैसे मतलब ये जो लीगल डिक्टेशन है या जर्नल डिक्टेशन जिनकी स्पीडें हैं वो लिख करके जिनको टाइप करना चाहते हैं, तो वो जो है इसमें जो है वहाँ से क्या कहते हैं उसको इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें जो आप ये पैकेज लेंगे तो उसके साथ इसमें जो है डिक्टेशंस भी अवेलेबल है। तो वहाँ पर जा कर के एक सॉफ्टवेयर भी आपको दिया जाएगा, जिस सॉफ्टवेयर में जा कर के इसको आप टाइप कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट कर दी गई वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ जाके इसको आप टेस्ट दे सकते हैं और क्या कहते हैं अपनी एक्यूरेसी को जान सकते हैं। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ इंग्लिश लीगल डिक्टेशन नंबर 2। इसकी स्पीड रहेगी लगभग 100। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। Learned counsel for the appellant accused submitted that the learned special judge failed to appreciate the evidence correctly and erred in holding the accused guilty of the offences. The SGL information concerning the securities repurchased by the UCO Bank on 5th April 1991 was received on 12th April 1991. Since there used to be a number of transactions by the client brokers and the repurchased SGL information was received after a gap of about 1 week, a clerical and bona fide mistake was committed by the appellant accused in getting the securities credited into the SGL account number 065 instead of account number 032 of the UCO Bank. There was no participation by the accused in any conspiracy to benefit accused number 3, Harshad Mehta. It was purely a clerical error that occurred in a casual way without any bad intention. In a normal way, the accused signed the covering note dated 13th April 1991, also signed by accused number 2, enabling the RBI to credit the securities into SGL account number 065. The accused appellant had no malified or dishonest intention to commit any fraud or cause loss to the UCO Bank or to cheat it. The mistake happened mechanically without the conscious involvement of the appellant. It is also evident from the record that accused number 2 himself admitted in his statement under section 313 CRPC that it was he who struck off account number 032 and wrote account number 065 in the covering note extension 300. Thus, the appellant cannot be charged with a severe punishment for a reasonable clerical mistake. Learned counsel also submitted that the appellant was not concerned with the routine work of the Hammam Street branch of UCO Bank. He was specially entrusted the duties of redemption and reconciliation of securities. While discharging those duties, when the appellant noticed the mistake, he immediately facilitated transfer of rupees 2 crores on 15th July 1991 from the account number 065 to account number 032
to set right the record. Learned special judge has failed to appreciate the fact in a true spirit that the SGL transfer forms concerning the securities sold by Harshad Mehta to the tune of rupees 15 crores from SGL transfer forms SGL account number 065 were not signed by the appellant and the appellant has no role in that transaction. This fact itself clearly establishes that the appellant was not part of any conspiracy with accused number 3 Harshad Mehta, but the special judge took a different and wrong view and erred by holding that the appellant transferred securities worth rupees 2 crores lying in the account number 065 to account number 032 to cover up the transaction. There was no evidence on record to establish a link between the accused appellant and the accused number 3, Harshad Mehta, forming a conspiracy between them, and the prosecution has utterly failed to prove this aspect, and therefore the appellant is entitled for benefit of doubt. Further contention of the learned counsel is that the appellant was only an assistant manager of the bank and scrupulously implementing the decisions taken by his superiors. Mr. K.M. Sinha, learned senior counsel, appearing for the appellant, submitted that this court has held that the beneficial provisions of the Act are to be applied only for the purpose of interpretation of the Act and not for arriving at a conclusion whether a person is juvenile or not, and the question whether an offender was juvenile on the date of commission of the offense or not is essentially a question of fact which is required to be determined on the basis of the materials brought on record by the parties. He submitted that this court has further held that Section 35 of the Evidence Act, which provides that an entry in a register maintained in the ordinary course of business by a public servant in discharge of his official duty or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country will only apply if the conditions mentioned in Section 35 are fulfilled. He submitted that Section 35 of the Evidence Act could not be applied to the entry of date of birth of respondent number 1 in the school records produced on behalf of respondent number 1 before the trial court, and on the evidence as produced, the trial court rightly held that the date of birth of the respondent number 1 cannot be believed to be 5/10/1988. He submitted that the trial court, after scrutinizing the evidence, has held that the evidence produced by respondent number 1 have been created for escaping conviction for a grave offense such as murder and was not believable, and by physical appearance respondent number 1 looks to be over 18 years of age, and on 11/7/2004 he was an adult and not a juvenile. He submitted that this finding of the trial court on a question of fact with regard to the age of respondent number 1 could not be disturbed by the High Court in a revision. In support of this proposition, he relied on Sitamani Rao versus State of UP 1986 for SCC 447, in which this court has held that the High Court, while exercising its jurisdiction under Articles 226 and 227 of the Constitution,
should not interfere with a finding of fact of the inferior court or tribunal except where the finding was perverse and not based on any material evidence or has resulted in manifest injustice. He submitted that in this decision, this court has further taken the view that if the trial court came to a conclusion which was possible on the evidence, the High Court will not disturb the conclusion arrived at by the trial court merely because the High Court will not disturb the conclusion arrived at by the trial court merely because the High Court is of the view that a different conclusion is also possible on the same evidence. He vehemently argued that the High Court has lost sight of these limitations of its jurisdiction and on the basis of its own appraisal of the evidence taken a view that the respondent number 1 was a juvenile on the date of the commission of the offence and has set aside the order of the trial court. ये 9 मिनट 55 सेकंड में ये पढ़ी गई है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। मोटा मोटा मान के चलिए आप ये हैं 152 वर्ड्स हैं, 1052 और डिवाइड बाई 9.9 ही करते हैं। हाँ 106 जैसे जितनी जो पिछली डिक्टेशन थी उतनी ही इसकी स्पीड रही है। हाय सर आप क्या कर रहे हो? ये डिक्टेशन थी जो जैसे मतलब भी इसको पहले अच्छे से आपने जैसे अभी लिखा है तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जो है कोचिंग, अगर आपको इसको टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जाननी है तो ये जैसे ये ऐप है ICS कोचिंग सेंटर ऐप, प्ले स्टोर पे आपको जैसे दिख जाएगी, या जैसे मतलब क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दे रखी है। दूसरा भी जैसे मतलब भी आप वो करना चाहते हैं आपको जैसे कुछ भी इंक्वायरी वगैरह कुछ भी लेना है तो 7206905115 इस पे जो है आप जो है मेरे से व्हाट्सएप करके जैसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके रिलेटेड जो वीडियोस हैं भी शुरू से किस तरह से इसको पढ़ना है वो भी आपको बता रखा है। जो बच्चे ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, डिक्टेशन वगैरह में है, तो रिटर्न के लिए भी जो है इस ऐप पर अलग से कोर्स अवेलेबल है। रिटर्न का जो एग्ज़ाम है तो उससे रिलेटेड यानी कि जो जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे DSSB का जो एग्ज़ाम है अभी, या SSC का जो एग्ज़ाम आएगा, और कोई भी जितने भी एग्ज़ाम आपके आते हैं, जैसे क्लर्क का फॉर्म भरते हो कुछ भी भरते हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी जो है ICS कोचिंग सेंटर तो पहले से ही रिटर्न की तैयारी कराते हैं, उसमें हमने अपनी क्लास जोड़ी है। तो हमारे जो YouTube चैनल वाले स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जा कर के उस कोर्स को परचेज़ करके उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये थी जैसे आज की डिक्टेशन। और बेसिक के लिए मैंने आपको बताया, बेसिक के लिए आपको वो ICS कोचिंग सेंटर ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो है ये कोर्स वहाँ आपको मिल जाएगा इंग्लिश वाला। जिनको हिंदी का करना हो हिंदी वाला ले सकते हैं और वहाँ से बिल्कुल शुरू से पढ़ सकते हैं। इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।